now we are moving to an important concept which is known as the sign change rule. ये एक अच्छा concept है and इससे थोड़ा सा different चीज है. इसको हम लोग Descartes rule भी बोलते हैं. Descartes is, I'll spell it out. It is DESCARTE. Descartes rule. We also call it as Descartes rule. You can note it down if you want. So what this rule says is, this is what it says. So just read through this in next 1 minute and then I'll explain what it is. Just go through this one. कैसा लग रहा है? Okay, so I hope everyone has at least read this. Like, what is this written? And let's go through it once. Okay. So for now, don't worry about it. कि क्या करना है, कैसे apply करना है. I'll apply it on an actual question, and that will give you more confidence. Okay. But अभी के लिए you just have to remember these things. कि अगर sign changes, मतलब कोई भी एक मान लो equation है, or maybe let me take one equation. Okay, for example, let's say the equation is x to the power 4 minus 3x cube. Everyone, like, you don't have to write, just try to understand what I'm writing. 2x squared plus x plus 5 is equals to 0. Okay, let's say this be a 4-degree equation. Okay, so now what I'm saying is, इसमें questions ऐसे आ सकते हैं कि इसके रूट्स को तुम एनालाइज करो, that how many of these roots are positive, how many are negative, etc. एक चीज तो मुझे पता है, it's a 4-degree equation, which means it will have 4 roots, right? Because it's a 4-degree equation. But अभी क्वेश्चन में ये पूछ सकते हैं कि ये रूट्स पॉजिटिव है, नेगेटिव है, कितने कॉन्जुगेट है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज है इसके लिए. So of course, neither you nor I can solve a 4-degree equation. We can maximum solve a quadratic or a cubic equation. 4 degree, 5 degree, 6 degree becomes very difficult. We can't solve it, at least in the exam setup. So what this Descartes rule says, it says कि simply तुम्हारे equation में sign changes कितने. Sign changes मतलब coefficient जो होता है, तो coefficient के अंदर sign changes कितने हैं, that's what you need to identify.
ठीक है। तो जितने भी साइन चेंजेस है उतने मैक्सिमम पॉजिटिव रूट्स हो सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल x to the power 4 का कोफिशिएंट इज 1 व्हिच इज पॉजिटिव। सो पॉजिटिव से नेगेटिव में जा रहा हूं, दिस इज फर्स्ट साइन चेंज, राइट। देन अगेन माइनस से प्लस में जा रहा हूं, दिस इज द सेकंड साइन चेंज। अगेन यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है, देयर इज नो साइन चेंज। सिमिलरली हियर इट इज प्लस, हियर इट इज प्लस, देयर इज नो साइन चेंज। तो यहाँ पे मेरे मैक्सिमम 2 साइन चेंजेस, राइट। आई हैव 2 साइन चेंजेस, ठीक है। If I have 2 sign changes in my equation, the Descartes rule say that I can have a maximum of 2 positive roots. यहाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है कि मैक्सिमम 2 पॉजिटिव रूट्स हो सकते हैं। इसका मतलब 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। तो आंसर में ये नहीं लगाना है कि 2 ही होगा, वी नेवर नो, बिकॉज Descartes rule says कि मैक्सिमम 2 पॉजिटिव रूट्स होंगे, ठीक है। नाउ सिमिलरली तो मुझे ये पता है कि यार इसके 4 रूट्स है, 4 में से ज्यादा 2 ही पॉजिटिव होंगे, तो बाकी 2 रूट्स क्या होंगे, वो नेगेटिव होंगे, कॉम्प्लेक्स होंगे, क्या होंगे। सो Descartes रूल का जो सेकंड पॉइंट होता है वो कह रहा है कि यार तुम ना x को अब -x से रिप्लेस कर दो और उसके बाद नंबर ऑफ साइन चेंजेस निकालो, और तब जो नंबर ऑफ साइन चेंजेस होंगे दैट विल बी इक्वल्स टू योर मैक्सिमम नंबर ऑफ नेगेटिव रूट्स। सो व्हाट आई एम डूइंग इज आई हैव स्टेप नंबर 1 रिप्लेस x बाय -x। तो अगर मैं इस इक्वेशन में x को -x से रिप्लेस करूंगा, व्हाट डू आई गेट, x टू द पावर 4, x की जगह -x गया, -x की पावर 4, अगेन माइनस की पावर 4 इज ऑलवेज प्लस, सो आई गेट x टू द पावर 4 ओनली। यहाँ पे माइनस का प्लस हो जाएगा, बिकॉज इफ आई रिप्लेस x बाय -x, दिस इज -x क्यूब व्हिच इज -x क्यूब, सो माइनस माइनस विल बी प्लस। सो माय इक्वेशन विल बी लाइक दिस, प्लस 2x स्क्वायर -x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे मैं साइन चेंज देखूंगा, कोई साइन चेंज नहीं है, यहाँ भी नहीं है। This is my first sign change and that is my second sign change. Sign changes plus to minus and minus to plus. So I have 2 sign changes, which का मतलब I can have maximum 2 negative roots. ठीक है, maximum 2 negative. This is the rule number 2. Okay. And rule number 3 says कि complex roots होगा तो इसका conjugate भी present ही होगा, right? क्योंकि सारे coefficients real है, so अगर कॉन्जुगेट्स होंगे तो वो 2 ही होंगे। मतलब आई कांट से कि 4 रूट्स है जिसमें से 3 तो पॉजिटिव है और 1 कॉन्जुगेट है, दैट कैन नेवर हैपन। क्योंकि कॉम्प्लेक्स रूट अगर 1 है तो वो 1 कभी भी नहीं होगा, उसका हमेशा पेयर भी होगा, बिकॉज कॉम्प्लेक्स रूट्स ऑलवेज अकर इन पेयर इस कंडीशन में जहां पे सारे कोएफिशिएंट्स रियल है। सो फॉर एग्जांपल अगर यही एक क्वेश्चन होता, इसके रूट्स को मुझे एनालाइज करना रहता कि इसके कितने पॉजिटिव रूट्स है, इसके कितने नेगेटिव रूट्स है एंड इसके कितने कॉम्प्लेक्स रूट्स है, तो मेरी टेबल क्या बनती, मेरी टेबल कुछ ऐसी बनती कि पॉजिटिव मुझे पता है, पॉजिटिव कैन बी मैक्सिमम 2 एंड नेगेटिव कैन आल्सो बी मैक्सिमम 2 एंड 2 + 2 = 4, मुझे पता है मैक्सिमम 4 ही रूट्स है। तो अगर 4 ही रूट्स है तब तो कॉम्प्लेक्स 0 हो गया, व्हिच मींस अगर कॉम्प्लेक्स रूट 0 है तो 4 रूट्स करने हैं, 4 रूट्स अगर करने हैं तो ऐसा नहीं हो सकता कि 3 पॉजिटिव है या 1 नेगेटिव है या 4 पॉजिटिव है या 0 नेगेटिव। एक ही केस बचेगा व्हिच इज 2 पॉजिटिव एंड 2 नेगेटिव, राइट। अब सेकंड केस ही होता है कि अब मेरे पास कॉम्प्लेक्स रूट 0 नहीं है, तो अगर मेरे पास 0 कॉम्प्लेक्स रूट्स चाहिए तो क्या होंगे, 1 इज नॉट पॉसिबल बिकॉज कॉम्प्लेक्स रूट्स विल ऑलवेज अकर इन पेयर। सो माय सेकंड केस इज दैट आई विल हैव 2 कॉम्प्लेक्स रूट्स बिकॉज कॉम्प्लेक्स रूट्स हमेशा पेयर में होंगे। तो अगर 2 कॉम्प्लेक्स रूट्स है तो बचे हुए 2 रूट्स क्या हो सकते हैं, या तो दोनों पॉजिटिव हो जाए, या फिर दोनों नेगेटिव हो जाए, या फिर 1-1 भी हो सकता है, राइट, कि 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव एंड 2 कॉम्प्लेक्स। दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव एंड दिस इज कॉम्प्लेक्स। यस, दिस इज आल्सो पॉसिबल, right? So these are my different possibilities if I have 2 complex roots. Similarly 3 complex roots हो नहीं सकते, so the next case is कि चारों ही complex roots है, इस case में I will have 0 positive and 0 negative. So now these are the 5 possibilities of my nature of roots. अब you can expect this question in CAT exam with different options. एक option में, बाकी 3 option में कोई random value होगी and सिर्फ एक option में इन पांचों में से एक particular case होगा and that option will be your answer. ये सबको क्लियर हुआ, लाइक व्हाट इज Descartes रूल, हाउ डू वी अप्लाई इट? गुड. Others in the Descartes are valid? Yes. So Ayush had a question, is the Descartes rule valid when one of the question is missing? Very good question, Ayush. Yes, it is valid. So for example अगर एक नहीं होता नंबर तो भी मैं नेक्स्ट वाले के साथ कंपैरिजन करता, ठीक है।
So yes, this is valid. Good. So if this is clear to you guys, then let's move on. Let me also ask the new students. Shashank, समझ में आ रहा है? Because it was a different thing. So just wanted to cross check if it's clear to you guys. Yes, clear. ठीक है, good. So I'll move on. For example, ये इसके रूट को मैं एनालाइज करता हूँ. अगर कोई भी क्यूबिक इक्वेशन है, क्यूबिक इक्वेशन के मैक्सिमम 3 रूट्स हो सकते हैं. अब मैक्सिमम 3 रूट्स का क्या मतलब है? या तो तीनों रूट्स रियल होंगे या फिर एक ही रूट रियल होगा, राइट? बिकॉज सी if I have to analyze, या तो रूट्स रियल होंगे या फिर रूट्स कॉम्प्लेक्स होंगे. If the roots are real, it can be either positive or negative. वो secondary है, right? But I can have 3 real roots and 0 complex roots. Next possibility is complex roots are 2 and real root is 1. I can't have 3 complex root and 0 real. ये तो possible ही नहीं है because complex roots have to be always even because they always occur in pair. So I have only 2 possibilities for a cubic equation. ठीक है? Simple thing. Next, ये तो I think we have already done it, right? That cubic equation में sum of the root is minus b by a. Sum of the roots taken 2 at a time is, this is the same concept, right? Minus, plus and minus. So minus b by a, c by a and d by a. Minus b by a is the sum. This is sum of the roots taken 2 at a time and this is the product of the roots. ये उसको prove भी कर दिया है मैंने. The roots are PQR. So I can write the expression as x minus p into x minus q into x minus r. If you expand this, you will get this. If you compare this by this, this is what you will get. So this is the proof of this theorem that we have done. Okay. So here comes the question for everyone. I want all of you to be able to solve this question. I'll give you 2 minutes. So करना क्या है? Analyze the nature of the roots. मतलब वो टेबल तुमको बनानी है कि कितने पॉजिटिव हो सकते हैं, कितने नेगेटिव हो सकते हैं, कितने कॉम्प्लेक्स रूट्स हो सकते हैं. That's it. Please solve this. Okay, I think time up. Let's see. So this is what is happening. Number of sign changes कितने? Plus 2 minus is the first sign change and minus 2 plus is the second sign change. So I have 2 sign changes here. Next step was I replace x by minus x. This is the equation that I get. So here also I have only 2 sign changes, 1 and 2. Right? इसका मतलब I can have maximum 2 positive real roots and I can have a maximum of 2 negative real roots. So this is how my table will look like, right? कि positive 2 है, negative 2 है, and complex is 0. But when I have 2 complex, I can have either 2 positive or 2 negative or 1 positive and 1 negative. Or alternatively, I can have all the 4 complexes. So these are the 5 different possibilities of the variants of roots. Clear? Everyone? Does this table make sense? Anyone has any doubt? Because this is the last question from this concept. Please confirm. Is it clear? Yes, no? Let me ask Rucha. Is it clear to you? Nikita? So I understood the positive roots and negative roots one. I'm just figuring out the complex roots. Okay. What is the issue or the concern? Complex roots क्या होता है रुचा? वो पता है ना? Like what is complex? Rucha? Okay. Sorry, sir, your voice was breaking. Okay. I just lost my internet. Yeah, I'm saying that you understand about complex roots, right? Like what are complex roots? Iota and all. Yes, Basically, the imaginary. Yes, it is the imaginary roots and they always occur in pair. Okay, sir. Okay. Because they always occur in pair, so their count will always be
a multiple of 2, either 0 or 2 or 4. I can't have one complex root. That's not possible. I can't have 3 complex roots. That's again not possible. It has to be an even number only. So what I did here is, I know that the total roots is 4 because the maximum power is 4. So if I have 4, then 2 positive, 2 negative, 2 plus 2 is 4. Then there has to be 0 complex. I can't have any other possibility for 0 complex because I need to have 4 real roots. So it has to be 2 plus 2 only. Next possibility is 2 complex roots. If I have 2 complex roots, I need to give 2 real roots. Now these 2 real roots can be either both of them are positive or both of them are negative, or I can have a 1 plus 1 account. In all of it, I will have 2 real and 2 complex roots. Now the next possibility is, after 2, I can have 4 complex roots. If I have 4 complex roots, there has to be 0 real roots. So 0 plus 0. Okay, so got it. Chalo. Let's move on to the next concept of maxima minima. So just though we will do maxima minima separately as a part of functions topic, but just wanted to appraise you about how do we solve maxima minima of a quadratic equation. So this is a quadratic equation given to you. You need to find the minimum value of this particular expression. That इसकी minimum value क्या होगी? ठीक है? I'll give you 2 minutes and then I'll discuss it. Okay, time is up. Let's see how many of you have gotten the right answer. Most of the answers I've received are incorrect. Let's see. See, there are multiple methods to solve this question. There are some formulas also, but I personally like this method. Okay, and the method is, you always try to create a perfect square here, because if you just learn the shortcut, you might end up getting a wrong answer, because there are multiple cases of when do you apply the shortcuts, when do you not apply the shortcuts, when is there a maximum, when is there a minimum, right? So by the way, what is minimum? See, this is a quadratic equation, right? This is a quadratic equation. So if you think from a graphical point of view, how would a quadratic equation look like? It is a parabola, so it will be something like this or something like that. It can be anywhere, right? Either it will be some parabola facing upward or it will be a parabola facing downward, right? How do we decide whether this is a parabola facing upward? We decide this basis the sign of A. So if the coefficient of x square is positive, then it will always open upward. If the coefficient of x square is negative, it will always open downwards, right? So this is how you can remember it. Now from the graph, let's say for example, in this question, it is positive, right? So the graph will be somewhere like this, right? I don't know niche aayega, upar aayega, kaise aayega, but it has to be in this fashion of u, right? So if it is in this fashion of u, I know ki minima to exist karega. What is minima? Iski minimum value, right? Maximum value will be infinity because this is the parabola, so it can take any value. I can even check ki agar maine x ki value infinity dal di, I will get infinity. So there is no maxima, but there will definitely be a minimum if a is greater than 0. Second case is, अगर a की वैल्यू मान लो नेगेटिव होती है, then graph would have looked like this. तो इस केस में मिनिमा क्या होता? कोई मिनिमा ही नहीं है, क्योंकि मैं जितनी ज्यादा वैल्यू x की बढ़ाते जाऊंगा, my value will keep on decreasing. So minimum value is minus infinity. But I definitely have an upper bound कि ये ग्राफ इससे हमेशा नीचे ही है. So in this case, I will have a maximum value when the value of a is negative. So this is just a brief of functions and graphs. Now, looking at this question, as I said, always when you have to find the maximum or minimum value of a quadratic equation, the best method is you always form a perfect square in this. So how do you form perfect square? The fastest method is x square का coefficient को सबसे पहले 1 करो. इसका मतलब x square के बाहर 2 है, 2 को सबसे पहले common ले जाओ. 2 is taken out, right? So if you take 2 common, what you get? X square. यहाँ से 2 common लिया तो अंदर क्या बचा? 7x by 2, and this is 3. ठीक है. Now you have to form a perfect square. यहाँ पे perfect square बनाना है. कैसे बनेगा perfect square? You know यहाँ पे plus sign है, so इसको तुमको a plus b whole square की form में break करना है. a plus b whole square is a square plus b square plus 2ab, right? इसका मतलब तुमको x square लाना है, तो पहली टर्म तो होनी चाहिए x plus something का whole square. यहाँ पे कुछ नंबर आएगा, इसका होल स्क्वायर आएगा. मुझे पता है कि जो भी ये नंबर आएगा, लेट्स से दिस इज a, राइट? अगर ये a होगा तो उसको ब्रेक करने पे क्या आएगा? 2 into x into a, और मुझे पता है 2 into x into a
because 2ab it has to be equals to 7x by 2, right? Because यहाँ पे x का कोफिशिएंट 7 by 2 है और यहाँ पे x का कोफिशिएंट 2a है, तो मुझे पता है कि 2a has to be equals to 7 by 2, so a का वैल्यू has to be 7 by 4. इसलिए यहाँ से ये समझ में आना चाहिए कि अंदर अगर मुझे इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, this has to be x plus 7 by 4 whole square. ठीक है, जो भी इसका कोफिशिएंट है उसको हाफ कर दोगे, x plus 7 by 4 whole square अगर करोगे, then if you expand this you will get x square plus 2 into x into 7 by 2, so it will be 7 by 2x plus you will get an extra term. Extra term क्या होगा? c square का, sorry b square का, which is 49 by 16. So if I have to represent this, this is plus 3, but if you open this you get plus 49 by 16. You will have to subtract 49 by 16 from here, ताकि ये 49 by 16 और ये 49 by 16 will get cancelled and you will essentially get the same thing. So this is how you expand this and form it as a perfect square. Now if I just simplify this, what is this? Twice of x plus 7 by 4 whole square. ये कितना हो गया? 16 into 3 48 minus 49 by 16. This is nothing but minus 1 by 16, right? तो ये तुम्हारा एक्सप्रेशन हो गया. अब तुमको इसका मिनिमम वैल्यू पूछा है. अब दिस इज अ परफेक्ट स्क्वायर. परफेक्ट स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू कितना होता है? 0 होता है, राइट? कोई भी परफेक्ट स्क्वायर विल ऑलवेज बी नॉन नेगेटिव. अगर मिनिमम वैल्यू पूछा है तो इसका मिनिमम वैल्यू कितना होगा? 0 होगा. अब ये पूछ ले कि इसका मिनिमम वैल्यू कब आएगा, तो इसका मिनिमम वैल्यू तब आएगा जब ये अंदर की टर्म 0 होगी. अंदर की टर्म 0 कब होगी? when x plus 7 by 4 is 0. So when x is equals to minus 7 by 4, उस केस में मेरे मिनिमम वैल्यू अटेंड होगी. बट क्वेश्चन में ये नहीं पूछा है कि x की कौन सी वैल्यू पे मिनिमम वैल्यू होगा. क्वेश्चन is asking you to find the minimum value. So if the minimum value is asked, you just get away with this square term because square term का minimum value is 0. अंदर क्या बचा? minus 1 by 16. बाहर है 2. When 2 is multiplied by minus 1 by 16, you get minus 1 by 8. So your answer to this question is minus 1 by 8. Is this clear? And this is the method that you will apply to all the question. Minimum पूछा है, maximum पूछा है, ऐसे ही करना है question. How many of you have understood this concept, or how many of you have any doubts? Two people? No doubt. Shashank? Others, please respond. I just have one more question after this and we'll be done. सबको clear है ये? Please say yes or no. ठीक है. I'm assuming that there are no doubts because ये काफी अच्छा concept है. ठीक है. So the method one is you always try to form a perfect square. Others who are engineers who know discriminant से भी निकल के आता है, this is the method for them. You can of course differentiate this, equate it to 0, get the value of x and put it back in the equation. तो वहां से भी चीज आ जाती है. So that's for you. If you're already aware of this method, you can use that. But I personally prefer method one, so I'm not trying to solve this question by method. Okay, method one is in fact the fastest method and error prone. Okay, so with this, let's move on to the last question for today. This is the question. Okay, and I've mentioned this as common mock question, which means the moment you start writing your SimCATs or MCATs or CL mocks or CRACU mocks, you will be encountered with such questions, and these are considered as difficult questions. So I thought, why not to explain it in the class itself. Okay, the question is a, b, c and d are the roots of this equation. You need to find the value of 3 minus a into 3 minus b into 3 minus c into 3 minus d. Please solve this. No one? Let me ask. Who has not spoken today? Gitanshu, please unmute and tell me how were you trying to approach this question? सर एक्चुअली एक तो लेंदी मेथड है सर कि मल्टीप्लाई करके, बट वो तो सही नहीं है, काफी टाइम टेकिंग है.
करेक्ट, तो वही मेथड से आपको क्लिक भी होता है कि इसको सिंप्लीफाई करो, मल्टीप्लाई हाँ। करो, फिर वो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी लगाओ, वो सारा आइडेंटिटी लगा के सॉल्व करो, हाँ बट वो हाँ हाँ। आधा घंटा लग जाएगा और ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। यस सर, यस सर, यस सर, ठीक है, आई एम ग्लैड एटलीस्ट तुमने ट्राई किया। यस सर। सी गीतांशु, तुम मुझे ये बताओ, हाँ ये क्वेश्चन तुमसे सॉल्व कराएंगे। सी x टू द पावर 4 माइनस 3x प्लस 1, अगर a b c d इस इक्वेशन के रूट्स है तो मैं इस इक्वेशन हाँ। को और कैसे लिख सकता हूँ इन द फॉर्म ऑफ a b c d? x minus a into x minus b into x minus a into x minus d. X. This is clear to everyone because a b c d are the roots of this equation, so I can rewrite the equation as this. Now Gitanshu, just think, तुमको निकालना क्या है? ये वैल्यू 3 minus a into 3 minus b into 3 minus c into 3 और minus तुम्हारे d. पास है क्या? x minus a, x minus b, x minus c, x minus d, which means हाँ, यहाँ से x तुमको यहाँ पे equals पहुंचना है तो तुमको क्या करना पड़ेगा? x equals to 3. All you have to do is to put x equals to 3 here. हाँ. Please try doing that. What do you get? 3 to the power 4, 81, minus 3 into 3, 9, plus 1. Plus. So isn't the value directly equals to 73? Yes sir. Yes. हम्म. काफी सिंपल था ये. Yes. Others, ये समझ में आया? And काफी different method है, I know, but see, it's too easy, right? So next time we see such question, manually we can solve it orally. This is x a b c d, x को 3 डालना है, so essentially all you have to do is to put the value x equals to 3 here, and you can do it orally also. 81 minus 9, 72 plus 1, 73 is the answer without having to solve. But mocks में क्या करेंगे सब लोग? वही convention method से जाएंगे, expand करेंगे bracket, and then they will definitely end up spending 10-15 minutes in this question. How many of you are clear with this? Great. So if this is clear, I think that covers the topic of quadratic equation. Okay. And I think we have covered some really good questions in this. I'll also stop the recording now. So that's all for today. I hope you all have learned something new. So yeah, stay tuned and press the subscribe button to be notified on the next video.